everyone. My name is Rafea Mohsin and welcome to another episode of Ghabrana Nahi EVENEMENT Conversations powered by EVENEMENT Corporate Event Management. आज के जो हमारे मेहमान हैं, he is an absolutely talented individual. बहुत सी different projects पे उन्होंने काम किया है. He's multi-talented, if I say. He's an actor, he's a director. Theatre में जब उनका नाम लिया जाता है, तो he is known for the work that he's done for theatre in Pakistan. For all of those people who don't know, उन्होंने corporate sector में भी as a trainer बहुत सारा काम किया है. EVENEMENT के साथ personally he's partnered and done a lot of team building interventions और बहुत ही genuine और passionate ये इंसान है. और without any further delay, I'd like to call on Omair Rana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Omair. कैसे हैं आप? Thank you so much I'm fine. for joining us. Thank you for having me here and thank you for that wonderful introduction. So kind of you. worries. Even I felt like employing myself. बिल्कुल बिल्कुल. So Omair, how is it going? हम start off हमेशा अपना show इससे करते हैं कि आजकल की जो situation है, जो current lockdown की condition है और quarantine की जो situation है, तो how are you handling और क्या as a trainer आप क्या positive messages, positive side इसको देखते हैं और message देना चाहेंगे? How are you holding up? Well, personally, ये जो round 2 आया है, इसने वाकई सही मायनों में जरा टेस्ट किया resolve. पहला वाला इतना टेस्ट भी नहीं कर रहा था. The aftershock has been more shocking. But as the show says, घबराना नहीं है. So चल रहा है. बिल्कुल. और and take it from me because घबराना में भी राना है. तो घबराना कह रहा है घबराना नहीं तो फिर घबराना नहीं है. बिल्कुल नहीं घबराना. Having said that, I cannot and on counting my blessings, and I would recommend everyone to do so. कि जो भी हालात जिस तरह के भी गुजर रहे हैं, और मुझे वाकई हकीकतन अंदाजा है कि how difficult it can be. ख्वाह वो आप एक घर में हो और टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या टफ सिचुएशन हो, स्ट्रेस उस तरह का या फाइनेंशियल स्ट्रेस जो कि बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद there's one little exercise जो हम at Skatema we do is we always recommend people कि रात को सोने से पहले दिन में किसी वक्त भी वैसे कर लें आप, कम अज कम 3 से 5 ऐसी कोई अपनी blessings जरा गिने और लिखें उसके बारे में, जो कि आपने मांगी भी नहीं और उस दिन आपको मिली है. Any of these blessings, it just sort of trains the brain in a particular way as well. I'll just spill the beans. वो है क्या? लेकिन it is a very good exercise to try and start from, amongst other things. But yeah, keep your intent positive. That's wonderful. A wonderful message from Omair. Thank you so much. I think as a nation हमें बहुत ज़रूरत है. Currently इस चीज़ पे focus करने की बहुत ज़रूरत है because we really need to power through जो हमारी current situation है, and we absolutely will, and we will inshallah come out shining bright on the other side. Inshallah. So, Inshallah. I can tell you this much from personal experience as well as a trainer, as a consultant, and again at Skatema we do this in the very beginning. कोई भी incident, and I'm quoting Hamlet, I mean, you might be able to see Shakespeare right over there. That little stuffed toy is Shakespeare, by the way. So we'll come to that in the show as well. I'm sure you will. Hamlet में Shakespeare कहता है कि nothing's either good or bad, only thinking makes it so. तो कोई भी वाकया अपनी नौयत में अच्छा बुरा नहीं होता, हम उसको वैल्यू डालते हैं. आप लोग हर एक ने मेरी तरह कोई ऐसे बहुत ही सख्त वक्त से गुजरे होंगे, and you look back and you say, यार, what great days they were. हालांकि they were tough times. I can assure you, even the toughest things that you've gone through in life, they have some positivity in it. कोई फायदा जरूर है आपकी जिंदगी में. जब गुजर जाएंगे ना, तब मुड़ के देखिएगा, and I'm sure you'll be able to choose कि how you want to see that event, is a good event or a bad event. That's your choice then. And I think that is the time when you actually realize, जब वो आप in the moment, वो कहते हैं ना कि उमर अक्सर बहुत कहा करते हैं कि the test is in the moment. तो in the moment आपको जो चीज जो है वो लग रही होती है कि बस दुनिया खत्म हो जाएगी. And then, when that time goes by and you look back and you say कि यार वो तो कुछ भी नहीं था, and we really got out of that. So wonderful. मैं हम शुरू करेंगे अपने शो को. Everybody knows you as a very popular actor. आपने बहुत से ड्रामों में, फिल्म में भी काम किया है, and you've done wonders. जो एक चीज है, I really personally want to come to that is थिएटर में जब आपका नाम लिया जाता है और जब थिएटर एक बहुत बड़ी चीज थी पाकिस्तान में, बहुत पॉपुलर थी और बहुत से प्लेज हो रहे थे, तो उसमें आपका बहुत नाम था, and you've also been a dramatics teacher in different schools, and so वो I'd like to know more about कि वो journey आपकी as working for the theater and as working as a dramatics का teacher, वो कैसा रहा? How was that for you, and do you miss it now that इतना ज़्यादा वो होता नहीं है?
Rafia, consider this कि आप I was an overseas Pakistani. I was born in the UAE, but I was always Pakistani. I was always reminded also, sometimes very rudely, in a British school, I'd be called a Paki and picked upon as, and it's like the N word. Let me just say it very clearly. It's like the N बिल्कुल words, like बिल्कुल that you'd be called through. So no matter where you are, you'll always recall yourself as your identity. I've done theater. I've done TV. I haven't done theater in over 2.5, 3 years now. And I do TV and film, but हूँ मैं theater का बंदा. So it's still बिल्कुल home for me. बिल्कुल That's what it means to me. बिल्कुल. So one of the experiences that I recently also found out was कि आपने Globe Theatre, Shakespeare का जो Globe Theatre Yeah. है in London, I was fortunate enough to visit that in my Oh, time in London. lovely, I was there for my lovely. master's last year, and I was fortunate enough to see that. So when I You went to found the out that, Globe. Yeah. yes, Is that absolutely. So amazing? it's it's just unbelievable. The experience is Yeah. just amazing, and the entire atmosphere and the aura that is around it is just it's amazing. So I'd like you to tell us about your experience. कैसे शुरू हुआ, कहाँ से वो? I believe it was a cultural Rafia, fest. Is that was, that yes. about that? I mean, you've put a big smile on my face, as you can tell. Yeah. And सबसे पहले, even before I start, I'd like you all to please, in your heart of hearts, in the heart of hearts, दिल से हमारी दोस्त नादिया जमील के लिए जरा एक दुआ जरूर करिएगा. She's going through a bit of a tough time physically and health wise, and she was one of our partners in the crime or at the Globe. जब हमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला था at the Olympics, so to speak, the cultural Olympics, क्योंकि sport Olympics, summer Olympics होने वाले थे लंदन में. So that same time we were called to represent Pakistan at the Globe. तो हर कोई शेक्सपियर के हर खेल को उन्हें हर जबान में किया था, इंक्लूडिंग साइन लैंग्वेज. तो 35 खेल 35 मुख्तलिफ जबानों में पाकिस्तान को कहा गया था कि आप टेमिंग ऑफ द श्रू उर्दू जबान में लेके आएगा. तो हमने उसकी नुमाइंदगी की थी. And this was again 2010 or something, the Olympics time. It was amazing. It was surreal. You've been there as an audience member. You'll understand what I mean by the बिल्कुल atmosphere. मुझे बिल्कुल अभी तक क्लियरली याद, और मैं बार बार दिखाता हूँ. मैंने स्क्रीन सेव भी अपनी रखी थी काफी दफा. मैंने शायद इंस्टा या कहीं ना कहीं जरूर डाली होगी. एक तस्वीर है दाऊद रैंडल, मेरे दोस्त, who was part of the team also, God bless him. उसने एक तस्वीर खींची थी स्टेज की. That stage is made from the same wood that the original stage was made from, which is 450 years old. And I bled on that stage. Nadia got to kick me on the nose so hard, I bled on that stage. Oops. So I've given toil, sweat, and blood to that blood, globe. literally. And it was memorable. मुझे इस तरह याद है कि जब हमें एक दिन पहले, daytime, early in the morning, summertime is around, a month ago from 2010, a month ago from now. तो मुझे हम लोग सबको लेके गए कि give you an orientation of the place. It was quiet. It was surreal. खामोश. और मैं जूती उतार के अदब से मैं स्टेज पे गया हूँ, और मैंने वहां 2 रकात नफल पढ़े, और मैंने वहां बैठ के मायरा को मैसेज किया कि आई एम हियर राइट नाउ. एंड शी आस्क्ड, बिकॉज उससे मैं 1-2 साल पहले मैं हज करके आया था. शी आस्क्ड, शी सेड, सच बताना कौन सा ज्यादा स्पिरिचुअल लग रहा था, हज या ये? आई वाज लाइक, आई एम नॉट आंसरिंग दैट क्वेश्चन. Yeah, that's a sorry. I'm not answering that. But it was phenomenal. I'm glad that at वो इमरान खान वाली बात है, the twilight of my career, I बिल्कुल. managed to represent Pakistan at the Globe. And I think ये बड़ी ऑनर की बात है, being a very patriotic person myself, मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, and getting a chance to represent your country at a global level, चाहे वो किसी भी चीज पे हो, और अगर वो किसी ऐसी Rafa, I'll tell you one more thing that we did. God bless these wonderful women in England. I mean, Angela Williams here, she's fine, but Valerie Cole as well. But Patricia, Trish Johanti, and these wonderful women in England who arranged this for us. And they're not even Pakistani, mind you. जिनका लगाव पाकिस्तान से इतना ज्यादा था. Susanna Harris Wilson, who directed us, कि उन्होंने जान लगा दी, माल लगा दिया, सब कुछ दिया, अपना वक्त दिया, यानी कि अपनी जिंदगी का हिस्सा दिया to make us do that. And one amazing thing they did was they took us to various schools in Oxford, in Rotherham, etc., in Bradford के करीब. We went to schools and we did a few little quick workshops over there in front of the entire class, in the entire school. Why? जो पाकिस्तानी diaspora है, जो कि पिस्ता है या frowned upon होता है. And again, as I said, I know what it feels like to be called a Paki. तो वो सारे जो थी उनको uplift करने के लिए. God bless these people. And that for me was one of the greatest treats, if not equal, if not greater, at least equal to the Globe. Absolutely. Again, I would say such a proud moment, and it's really, you feel really warm जब आपको कोई global level पे या कोई जो पाकिस्तानी नहीं है या मुसलमान नहीं है, बाहर की countries में जब आपको इस तरह की acceptance मिलती है, and how they really boost
boost your ego and boost yourself up ke acceptance hai, you can get out of those stereotypes and जब आप अच्छा काम करते हैं अपने अच्छे तरीके से अपने country को represent करते हैं तो acceptance is there, so absolutely wonderful. We're going to jump in now, Omair, to our first segment, and that is the rapid fire round. So are you ready? Why do you think I just had some water? I had a feeling something's coming. Ready हो जाओ. Exactly, बिल्कुल सही है. Okay जी, rapid fire round का हमारा पहला question जो है वो है a personal favorite character that you got to play. Oh, okay. For TV, I really enjoyed characters like Sange Marmar mein jo mera character tha Server. I enjoyed doing Server at this time. I enjoyed doing Safiullah in Sange Marmar, and I enjoyed doing Arsalan in Maan. Maza aaya tha. Okay, great. Stage की तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बोल नहीं सकता. Stage की ज़्यादा लंबी हो जाती है. हाँ. I think Server आपका बहुत popular character आजकल वैसे ही चल रहा है because it's current and wonderful. Okay जी. What advice would you give to your younger self? Oh, it's okay. I'll just say, dude, it's okay. It's fine. You're good. You're okay. It's cool. That's what I would say. It's a very broad thing I've said, but I hope it's wonderful advice. The depth of it I understand. Absolutely wonderful. Okay. So, do you see anyone in the industry or outside as your mentor and your inspiration? TV industry में बहुत कम. I'll be very honest. Unfortunately, TV industry में बहुत कम. I do look upon almost everyone, so many people. हर एक से कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है, and I enjoy that. हर एक से. But मेरे थिएटर के mentors रहे असल में, तो मेरे उस्ताद जो हैं वो फिर उस मट्टी के रहे, उस लक्कड़ के रहे. So I've really enjoyed that. Angela Williams is one of the names that I've taken, and I really respect her for that. Bilkul. As you said, theatre is where your heart is, and you're a theatre man. So, bilkul. Okay, ji, next. What is the best piece of advice that has ever been given to you? Best piece of advice given to me? I think the best piece of advice given to me is, again, I was going through a personal dilemma when I came across Skhetma's philosophy. और सैयद फ़ाखर हसन शाह, उनको मैं हमेशा उस्ताद ही कहता हूँ. मेरे colleague, I should call him as a colleague. He's my colleague. But उन्होंने कहा था कि पुत्र, always focus on shifting your intent in every transaction. Shift your intent from getting to unconditional giving. And I started learning and practicing that ever since. It's a wonderful thought and just very deep, very, very deep. So the greatest advice I've ever gotten. Yeah. Absolutely wonderful. What habit of yours is a fun one? What habit of yours does your wife dislike? Sometimes not taking things too seriously, still having a laugh when it might be mistimed. Yeah, absolutely. Who knows? It might be my last laugh. Exactly. That's the way to go about it. Absolutely. Okay. What is the meanest thing that you've ever said to someone? That I've ever said to someone? Yeah. What is the meanest thing I've ever said to someone? I'm not really sure. I hope I haven't broken someone's heart so much. Maybe I'm sure I must have said, we can still be friends. Oh my God. Wow, that really is me. Oh. Okay. That's borderline mean. Absolutely. Yeah. Okay. So, who is your favorite person in the world? Oh, I have so many. Many. I start from my own house, my wife, my children, amongst most favorite people in my world. So many. And as individuals, not क्योंकि रिश्ता है, but as individuals, मुझे पसंद है ये तीन लोग. Just to start, फिर और भी हैं. बिल्कुल. Okay. Next question. What do you hate most about being famous? Anonymity. मुझे हमेशा घबराहट रही है. I always want to remain anonymous. मुझे अभी तक याद है, I was living in Falcon Complex, Gulberg, और Adil Hashmi is a lovely chap. तो अदील मॉडल टाउन में रहता था, एंड अदील ने कहा कि यार, वो फैल्कन कॉम्प्लेक्स में एक लंबा सा किलोमीटर का है, तो कैन एनीवन कम देयर एंड जॉग एंड वॉक. मैंने कहा कम, मैं भी करता हूँ, तुम भी कर लो, मेरे साथ कर लो. तो आई आस्क्ड हिम वंस कि व्हाई डोंट यू गो टू मॉडल टाउन पार्क? यार, इज मॉडल टाउन पार्क. He said, yeah, everyone keeps coming and asking me and talking and this, that, so I don't get my time.
That I remember was a moment I thought, bloody hell, ये कैसी जिंदगी होगी? So to a great extent, not only because of my character and my role and low profile otherwise, मैं बाज़-औक़ात जैसे if you notice server मैंने किए हैं, and I've immediately changed my look. I like to change my look to become anonymous. हालांकि lockdown है, उसके बावजूद I'd rather remain anonymous. I want to get on my cycle and walk into the Abdurun Shahar Lahore whenever I can. I want to be in the public transport. I want to feel comfortable. So anonymity. Wonderful. I think it's very important for you as a person. You need your personal space in your personal life as well. Absolutely. Okay. What is the one project that you've done that you wish you hadn't done? Ooh. Yeah, I consider myself very fortunate कि मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया जो मैंने पछताया हूँ कि यार ये करना ही नहीं चाहिए था. हाँ, लेकिन ये जरूर रहा है काफी प्रोजेक्ट्स में कि यार I wish I could have done it better. So I would like to do them again. Or have the project been done better? मिसाल के तौर पे तो दिल फरेब एक खेल था. यार I wish that we had done it better. हमने उसके साथ बहुत ज्यादती की है. और मुझे शर्मिंदगी होती है trying to reach out to that writer ज़फर मिराज साहब. यार वो बहुत उम्दा खेल था. हमने सही नहीं किया उसके साथ ज्यादती की. So that's one kind of thing I regret. Okay. And you always want to, do justice to these great projects that come your way. Absolutely. Yeah. Okay. So ये हमारा last question है जी rapid fire का. It is in line with the name of the show and you have to complete the sentence. घबराना नहीं क्योंकि घबराने का कोई फायदा नहीं होता. Panic only makes you do things worse. Makes you feel worse. घबराने का कोई फायदा है ही नहीं सिरे से. आपने जो भी करना है, even when there's fire around you, आपको सबसे पहली चीज सिखाई जाती है घबराना नहीं है, ताकि आप decisions लें, cool mindedly ले सकें. गलतियां भी होंगी, doesn't matter. At least you'll own those mistakes. You won't pass it on the buck कि मैंने सही तरह सोचा नहीं था. बिल्कुल, बिल्कुल. Wonderful answer. I think one of our really, really good answers on the show. Well done, Omair. Okay, you did great on the rapid fire. Unfortunately, Coffee with Karan नहीं है तो आपको hamper नहीं मिलने वाला. लेकिन मैं अभी कहने लगा था, and this is on a good occasion, but saying a sad thing, but मुझे तारिक अजीज साहब का बहुत अफसोस हो रहा था. और मैं जिंदगी भर उनके लिए दुआएं देता हूँ. और तारिक अजीज साहब अब हमें नहीं रहे, लेकिन ऐसे मौके पे वाकई आवाज निकलनी चाहिए. इलेक्ट्रा. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा जी, Omair, we're going to go towards our audience and we're going to take up a couple of questions क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी fans जो हैं आपके दिल पे. ज़फीना लिखती हैं कि hi, what is the most challenging project that you ever took part in? Zafina, a couple of them. For TV, Pia Bedardi was a little challenging because मैंने सोप करना नहीं था, लेकिन काशिफ निसार being God bless him, उन्होंने कहा कि यार कर दे और अच्छे तरीके से अच्छी टीम वगैरह और इसको जरा मीट डालना है, कंटेंट डालना है, तो I had to work on that psychopathic character to justify him. दूसरा इस character के लिए, सर्वर के लिए, this was a little challenging because I did not know of Farooq Rain, Dada, but I'd heard great things about him and very rightly called Dada. But at the same time, character इतना अनोखा है और इतना challenging है और उसको इतना गलीज नहीं करना कि बंदा थू भी करे बस थू ही करता रहे. उसको justify किसी तरह मेरे mind में होना चाहिए. Stage में I think one of the two most challenging projects I've ever done. एक तो ये Taming of the Shrew, इलाज इज़्ज़त दस्तयाब है, क्योंकि 12-13 महीने हमने rehearse किया था. हम एक दूसरे गले में घुस गए थे. और दूसरा था एक Noises Off. I think it's the toughest English comedy that I've ever had to act in. I've acted in it. I've directed it also. I've produced it also. तीनों capacities में Noises Off is one of the toughest I've ever done. बिल्कुल. Zafina, I hope that answers your question. और ये बहुत अच्छे roles हैं. Anam Sethi कहती हैं, wow, oh my God, a lot of appreciation coming in as well. Apart from questions, Hina Hassan says, hi Hina, thank you. Walaikum, hi Hina. Samia Hassan says, hello, Omair Rana. Okay, great. He started with an O. बिल्कुल. अच्छा, हम कैरेक्टर्स की उमेर जब आपकी बात करते हैं एंड आई थिंक क्योंकि मैं पर्सनली ड्रामाज मेरे घर में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं. 8 से 9 जब ड्रामा लगता है तो सांस नहीं ले सकता कोई घर में. तो जब आपने ज्यादातर फॉर एग्जांपल मैं हम टीवी पे देखती हूँ या कि और चैनल्स पे देखती हूँ, यू हैव डन अ कपल ऑफ विलेनस कैरेक्टर्स, जैसे आप सर्वर की भी बात करते हैं, अभी वो नेगेटिव रोल में पाया जाता है. सो एंड देन लिंकिंग इट टू द पॉइंट ऑफ एनोनिमिटी जो आपने कहा, जब आप कभी बाहर जाते हैं या कहीं
obviously लोग आपको पहचानते हैं, they know you are the actor उमैर राना, तो कभी आपको कैरेक्टर की वजह से कोई बातें सुनने को मिली कि ये देखा, मतलब उससे एसोसिएट किया कि ये उमैर राना एज एन इंडिविजुअल नहीं है, ये बस वो ही इंसान है जो कितना बुरा बना हुआ है? मुझे इसमें ना राफी, whenever I've done some negative character which has become big, like this, like ओ रंगरेजा और like पिया बेदर्दी, ये तीन ही बड़े हैं जो मैंने नेगेटिव किए हैं. उसके अलावा सारे मैंने पॉजिटिव किए या कंट्रोवर्शियल अदरवाइज कैसे, बट नॉट नेगेटिव. तो उसमें हमेशा मुझे जो 2 कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, एक मेरे कैरेक्टर को मिला है सबसे पहले कि माय गॉड इट्स अ हॉरिबल कैरेक्टर, बहुत ज्यादती कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों है, ब्ला ब्ला ब्ला. और साथ ही साथ मुझे लगता है मेरी जात को बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन आप जिंदगी में तो ऐसे नहीं लग रहे, वैसे तो आप बड़े शरीफ लगते हैं, तो आपने ऐसे तो क्या किए, क्यों करते हैं आपको कास्ट इस चीज में, आप क्यों लेते हैं ऐसे कैरेक्टर्स. सो बोथ वेज आई अप्रिशिएट. एंड अगेन ये मैं हमेशा कहता हूँ हर एक को जो फिल्म बनाता है, टीवी बनाता है, लिखता है, हमारी ऑडियंस बहुत बाशऊर है. खबरदार किसी ने इनको तौबा नाउजुबिल्लाह बेवकूफ समझा, ये बहुत बाशऊर है, ये फौरन समझ जाते हैं कि आप असल में क्या हैं और कर क्या रहे हैं और कैसे कर रहे हैं. सो इनको हम जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड ऐसे चीजें देंगे ना, ये एंजॉय करें. बिल्कुल. अच्छा जी, कमिंग टू एक और सवाल मेरे दिमाग में से घूमता घूमता आया. हम जब थिएटर की बात कर रहे थे पहले, तो एक जमाना था जब थिएटर का जमाना था, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ प्लेस गोइंग ऑन, और शराबील इज वन ऑफ द नेम्स, इज वेरी पॉपुलर. उनके प्लेस होते थे. आई बिलीव आपने काम भी किया है उनके साथ. तो डू यू इन द फ्यूचर सी, आजकल के तो ऑब्वियसली हालात ऐसे हैं, बट डू यू समवॉट इन द फ्यूचर सी कि ये थिएटर विल यू नो बी रिवाइव्ड, और ये आएगा वापस, कि वो टाइम उसका था एंड यू नो दैट नहीं आएगा. I'll tell you why. देखो, this has become one of the greatest disruptors, the COVID-19. Disruptors, and especially in the modern day in language, disruptors have now been interpreted positively also. उनको अंदाजा हुआ है कि जब कोई disruption होती है तो उसकी वजह से भी positive serendipity या growth या innovations या survival की वजह से चीजें develop होती हैं. ये जो हुई है ना, this has taken us back. Do you know कि West End पे काफी सारे थिएटर हॉल्स अब चेक हो रहे हैं, बंद शायद हो जाएं, कोटेल हो जाएं, क्योंकि वेस्ट एंड पे इतनी ज्यादा महंगी टिकट होना शुरू हो गई थी. अब वो चेक हो जाएगी. अब हमारे यहाँ आ जाए, हमारा तो कल्चर फर्क है, हमारी इकोनॉमी फर्क है. पहली बात ये होगा कि सबसे पहले अब लोग जो है ना कंस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे. आपके स्पॉन्सर्स भी इस तरह की चीजों के अंदर स्पॉन्सरशिप डालना शुरू कर देंगे. दे विल ट्राई टू गो फॉर डिजिटल स्टफ, और अगर करना ही है ना तो इम्पैक्टफुल इन पर्सन चीज होनी चाहिए. सो पीपल विल गो फॉर दैट. अब जो लोग हैं ना टिकट खरीदने के लिए जाएंगे, कि अब 300 रुपए की या 500 रुपए की टिकट खरीद सकते हैं, ना कि 1000-2000 की टिकट. सो वो जाएंगे इसके लिए. इकोनॉमी की वजह से गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर टैक्स को छूट देगी. उनको पता है अगर इनको क्रिएटिव आउटलेट नहीं दी, ये कौम पागल हो जाएगी. So they will have to give that. So all these things will come along, etc., etc. And ultimately, sooner or later, the state realizes 5th generation warfare का वक्त है, तो कल्चर में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा. So they will do it. Absolutely. And we have another question by Ina Athar. We're going to take that. How was your experience in the movie Chambeli? Oh, wow. क्या याद दिला दिया. Thank you, Ina, for your question. Thank you, Ina. ये डिजिटल और I mean, मैं जब आया हूँ back into TV and essentially वो था उल्लू बराए फरोख नहीं. और वो इसलिए आया था क्योंकि उससे पहले मैंने left TV. I took up a project called Tamanna, which was a film. Then I took up Dukhtar, which was a film, और Chambeli just before that. और तीनों की नजरियाती थी. ये closest to theater kind of इनकी लोग नहीं होते उसके हिसाब से सोचती. चमेली का मकसद ये था to motivate people to get out and own their vote. So that was the sales pitch. That's all I needed to hear. Shahzad Nawaz and Ismail Jilani to say that. Shahzad, who was producing it and acted in it as well, Ismail, who was directing. So that experience was pretty intense, pretty interesting. बड़े अरसे बाद फिर एक proper film बन रही थी और इस मकसद से बन रही थी, और frankly budget कोई नहीं था बेचारों के पास, लेकिन film वो बना रही थी, and they managed to make it. So it was very fulfilling that way. My experience for Chameli then proceeds, क्योंकि किस तरह धक्का दे रहे थे फिल्म बनाने में, और उसके बाद से मेरे लिए एक स्टम्बल बन गया to उल्लू बराए फरोखनी again, God bless काशिफ निसार, to do TV again, और फिर मैं selective TV work में आ गया. So yeah, Chameli experience still lives, man. Chambeli. Okay, ji. Usman Rizwan asked, why Waris said... Usman, I know what you're talking about. Waris Nihari? You must be talking about Nihari. मैं हूँ एक निहारी बफ. मैंने दुनिया में शहरों में शहर जाके निहारी खाई है.
घर अच्छा, घर, दुकान दुकान। लाहौर अलोन मैंने तकरीबन कोई 35 एटलीस्ट 35-40 प्योर निहारी हाउसेस पे निहारियां खाई हुई हैं। एंड आई हाँ, कम विद दैट काइंड ऑफ फीडबैक, कौन कौन सी निहारी अच्छी है। एक अंदरून शहर लाहौर में लोहारी में होती थी हाजी निहारी, अभी भी है, अच्छा, लेकिन मेरे लिए वारिस स्टिल नंबर वन इन लाहौर। बिल्कुल, कराची में द बेस्ट निहारी आई एवर हैड वाज इन कराची, लेकिन अब मुझे मिल नहीं रही बिकॉज जेंटलमैन्स पास्ड अवे। बट इफ यू गो टू कराची तो आप जी जाएं, I'll tell you where to go in Karachi. You go to Karachi, I'll tell you where to have it. It's not निहारी हाउस, it's a कबाब हाउस। कबाब ओके, हाउस की निहारी बड़ी आला है। लेकिन वारिस में एक बात बता दूं, and this ties in with our corporate stuff as well. अच्छा, 91 से मैं वारिस निहारी जा रहा हूँ, and I met अच्छा, son then, and मैं कहा जी राणा साहब आए ने, मैंने क्या पता मैंने जानते नहीं राणा साहब, तो I met him, मैं कहा जनाब, उनको मैंने कहा मैं जी 1991 से मैं आ रहा हूँ और पूरे लाहौर शहर पूरे पाकिस्तान में भी खा रहा हूँ, मैंने दिल्ली जाके निहारी खाई है, लेकिन आपकी निहारी अभी भी जैसे मुझे सबसे बेहतरीन लगती है। क्या वजह है? He said something which my grandfather used to say, which was part of our values, कि सरकार ए एनु इबादत समझ के करीब है, कि जहां से अल्लाह ताला आपको रिस्क देता है ना, वो आपकी इबादत गाह है। मेरे नाना बताया करते थे कि उनके साथ एक सिख होता था, उसकी दुकान थी, वो आता था, उसको धोता था, फिर साफ कपड़े पहनता था, फिर काम शुरू करता था। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि ये इबादत गाह है। इकबाल भी इसको बिल्कुल, इबादत गाह समझता है। So when you do your duty where you God provides to you, has to be a place of worship. So do it honestly. That's why I like बिल्कुल। Wales. And that level of respect, I think, is absolutely necessary. मतलब आपको as a person इतनी satisfaction मिलती है कि आप पूरे दिल से कोई भी काम हो, जैसे I said, चाहे आप किसी फील्ड में हो, आप एक्टिंग में हैं, मैं अपना काम करती हूँ, दिल से करें तो आई थिंक उसका रिजल्ट भी और उसकी Yeah, जो आउटकम है वो भी पॉजिटिव होती है, true. एंड यू गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट दिल इन द से, बेस्ट और वे राफी आपने कहा पॉसिबल। नेक नियति से, आपकी नियत ये नहीं होनी चाहिए आज मैं दुकान खोल बिल्कुल, रहा हूँ मैं कितना कुछ निकाल लूं। पैसे नियत ये होती है बनाऊं, कि मैंने क्या बिल्कुल, देना है। I'll give you another example. बिल्कुल, We talk about food. I'm a foodie man. या Uh, एब्सोल्युटली, गवाल मंडी की फीके की लस्सी बड़ी मशहूर है। My father is from गवाल मंडी बिल्कुल, also for a बिल्कुल, great period of time. तो अच्छा, वहां एक दफा किसी लस्सी में रेड़का मार के जब पेड़ा डाल के रेड़का मारा है तो उसमें मक्खी आ गई। उसने किसी ने कहा यार मक्खी आ गई है, उन्होंने मक्खी उठा के ना यूं फेंकी, आ लो। बाप रे! My father was like जे मेरा प्यो ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ हाँ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੜਨ ਲਾਂਦਾ। छिहत्तर He बारिश never does it. As opposed to, and here's a free advertisement to everyone, as opposed to अंदरून शहर गुमटी बाजार जेदे की लस्सी। अगर आप अच्छा, वहां जाएं और आपके हाथ में कुलचा होगा ना कि सरकार एक हाँ, लस्सी दे दो, वो कहेगा कुलचा पकड़ा है। उसने कुलचा लिया, मलाई डाली, एलो पहले कुलचा खाओ, लस्सी आ रही है। फिर वाओ, आ इज़न्ट रही दैट अमेजिंग? Amazing. अच्छा, now all of our viewers and all of the people who are watching know कि जब आप एक खाने की कोई information लेनी है, you know who your go-to person is. Especially अंदरून शहर के restaurants से अगर आप Yeah, survey करना चाहते हैं तो Omair is the person. Now we know who we need to get in touch with. Absolutely wonderful. अच्छा जी उमेर, अब हम अपने second segment की तरफ बढ़ेंगे, and the second segment is a little more interesting, I believe, than the rapid fire. उसके अंदर आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी, and the first thought that comes to your mind, you just have to blur it out. I think okay. we powered through pretty well during the show, तो I think ये भी हमारा Yeah. segment अच्छा गुजरेगा. Let us see the pictures. Let's see the pictures. It seems like a psychoanalysis, Robin Schranks. Yeah. Ah, यार ये तकरीर जो है ना, oh God bless him for this speech. God bless him for this speech. मुझे clearly याद है, I saw this live, मैं शायद shoot पे था या कहाँ था, but I was watching it live and I instantly posted, finally I had a prime minister represent me and my values in the world forum. So And you thank could you be IQ for proud this of. particular speech. Absolutely. Super. I'm already missing it. मैं एक जाती बात यहाँ let me share for the first time. जी जी, मैंने sure. बहुत सारे लोग, अमानुल्लाह खान साहब फौत हुए, ये फौत हुए, बहुत सारे लोग हुए जिनको मुझे फर्क पड़ा, लेकिन मैंने पब्लिकली पोस्ट नहीं किया। आई डू नॉट लाइक टू एडवर्टाइज इट फ्रैंकली स्पीकिंग, समटाइम्स दे गेट टू क्लोज। मुझे अक्सर, हियर्स अ सीक्रेट नो वन नोस, अक्सर मुझे गलत नंबर पे कॉल्स आती हैं और कहते हैं तारिक अजीज साहब बात कर रहे हैं, तो तारिक अजीज साहब के नाम से मेरा नंबर किसी तरह स्पाइरल में चला गया और अच्छा, ऑन एंड ऑफ आती थी। 2-3 दिन पहले मुझे कॉल आई, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं कहा जी क्यों? ये तारिक अजीज साहब का नंबर है। मैंने कहा नहीं जी। अच्छा सॉरी। पता नहीं क्यों मेरे कान खड़े हो गए। इंस्टेंटली आई गॉट द मैसेज ही इज पास्ड अवे। तो oh, द फैक्ट कि मुझे गलती से भी मेरे नंबर को भी तारिक अजीज साहब का नंबर समझा गया, फॉर मी दैट्स एन ऑनर।
Absolutely, and what a legend, and what a loss What a to the lesson. industry. Absolutely. Take me back. Take me back. Take Seriously. So me maybe Yogi, take back. me back to London, please. I miss Yes. it. But ironically, ये तस्वीर जहाँ से खींची हुई है ना, my हाँ, brother has never seen me on stage. I've done 60 odd really? productions. My brother never saw me on stage. But जहाँ से तस्वीर खींची और जिस वक्त की खींची है, जब when I was doing the play, my brother flew down from New York and probably sat around this place and saw me on stage. Amazing. Isn't that amazing? Just look at it. It's absolutely amazing. Gorgeous. Gorgeous. Acha ji, next. यार खूबसूरत, जबरदस्त. मुझे one of the greatest compliments that I've been getting randomly from some fan, I saw it, I shared it once or twice, was Yumna और मेरे characters के ऊपर है ना, they would dub the lines of these two characters. And what a Acha. charming human being. Wonderful. And Marina ji, I think, is the queen of the Silver Hair Club. Madam, I'm your servant. Absolutely. And Omair is following in your footsteps. I'm your servant and slave, madam. Subhanallah. I think the wisdom this man has had is something that we can only aspire towards. And जैसे मैंने कहा अभी मैं जिद्दी की लस्सी के लिए मैं साइकिल पे बैठ के ना I used to go to अंदरून शहर and cycle back. तो एक अलामा इकबाल रोड पे जाते हैं. So on the way back I stopped over once. Finally had the courage. कि वहाँ जहाँ आपने आखिरी वक्त अपना गुजारा था. तो जावेद इकबाल साहब ने घर वो दे दिया था हुकूमत को. तो I've seen that. It's a surreal moment. I strongly recommend कि जो लाहौर में है जिनको मौका मिले क्वारंटाइन से निकलने के बाद, do go to Allama Iqbal Road, go to his house, and you'll absorb that moment that the man's wisdom had. Absolutely. Wonderful. Yeah, Yumna! मुझे पता है बहुत सारे मेरे जो इसके फैंस या इसके फैंस होंगे ना वो कह रहे होंगे ये है ना ये है ना Not at all. For me, उल्लू बराए फरोख नहीं was the first time मैंने इनके साथ काम किया था और मुझे काशिफ निसार जैसे शख्स who has a very high standard कहा था कि यार बला चीज है in his language बला चीज है अच्छा देखने मैं कहा वाकई she's something peculiar about this. After that अब जाके सरवर के साथ मैंने बन के इसके साथ किया which has again been a blessing. But अभी हम एक रिकॉर्ड कर रहे थे कि लॉकडाउन हो गया. अच्छा. You guys have to wait for that. You think she has done something amazing as Majibin? You have to wait. क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली दफा इस खातून को ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि wow, you'll have to wait for that. If Majbeen you're saying is मेरे लिए तो she blew me away with her character played as Majbeen. She's done such a great job. So I'm very excited for this. Absolutely. मेरी हीरो. इसके साथ मेरी immediately दुआएं निकलती हैं. Recently, coincidentally, she has graduated. So I never do these things, but I sent her a message. God bless her and her father and the family and everyone. I went जब हम संगे मरमर कर रहे थे मैं बार-बार उस जगह जाता था जहाँ इसके साथ वाकया हुआ था. मैं उस चौक पे जाता था जहाँ जुल्म हुआ जाता था जिसको खूनी चौक भी कहते थे. I used to go there. और अगर मैंने किसी पॉलिटिकल बहस में हीटेड अप आर्गुमेंट की है तो इसके लिए की है. मुझे इतना दुख होता है जब भी लोग कहते हैं कि ये जी प्लांटेड थी और ये फायदा था. अस्तगफिरुल्लाह. हम अपनी बच्ची को अगर नहीं अपना सकते जिसके साथ ये हुआ है तो हम किसको अपनाएंगे. और मेरी आखिरी बहस उनके साथ सिर्फ ये होती है ठीक है मान लिया मैंने कि ये प्लांटेड है जासूस है जो भी है तबनाउज़ बातें करते हैं सर ने मान लिया. मैसेज क्या देती है इल्म के लिए लड़ो कलम के लिए लड़ो. मुझे बताओ इकरा से बढ़कर कोई पैगाम था तो वो पैगाम ही सही है यार. तो हमसे तो बेहतर ये जासूस है फिर. Exactly. बिल्कुल. Oh, I'm home. This is feeling of home. So why Myra missing it? And I'm sure she's taking a picture. Yeah. So this is me feeling at home. Cute. It's an adorable picture. Comfy day at home. This is home. ये घर है. This is वो कहते हैं जो सुख चौबारे ना बलख ना बुखारे. मेरा चौबारा ये कुंभ है. क्या बात है. Wonderful. Okay, Ji, that brings us towards the closing of the show. Thank you so much, Omair. आपने हमें join किया. It was a very much awaited episode. बहुत से लोग were very excited to see you, and I'm sure कि उन्होंने बहुत enjoy किया आपका show. The energy and the positivity
and the candidness that you brought, which is the essence of the show, was wonderful. Thank you so much. जाते जाते आप हमारे viewers के लिए कुछ कहना चाहेंगे? Well, I would just like to start by thanking you. Thank you very much. I've got some great, good and very tough memories with Evenement. बहुत कुछ हमने काम किया इकट्ठे, जब ये लोगो लाल भी नहीं होता था तब की बात कर रहा हूँ मैं. तब की बात. And उमर सईद खान के साथ हम लोग कौन-कौन से पहाड़ कहाँ-कहाँ चढ़े हैं, कहाँ उतरे हैं, क्या किया है, किस दिसंबर की सर्दी में, न्यू ईयर्स 1 जनवरी में बारिश में हमने क्या-क्या काम किए हैं. Tough work, but it's been great memories, great relations. I'd like to hang on to the good ones always. This session today is quite spiritual in that. Thank you very much, Rafea, for conducting it. As the heat and humidity catches up in Lahore, I know. Thank you very much. जो आए सुन रहे हैं, सुना है, सुनेंगे, दुआओं में याद रखें, आप सब हमारी दुआओं में हैं. So I really, from the depth of my heart, really appreciate the love that you have. And I would like you to, I always go back. मेरी जिंदगी में जो तकलीफ दे वक्त आया है, मरहला आया है, उसका भी मैं मुड़ के शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि उसने मुझे उससे गुजारा है. इफ नथिंग एल्स कि मेरा एक बैरोमीटर सेट हो गया, मुझे कदर हुई है कि असल मसले क्या होते हैं, दूसरे क्या होते हैं. मेरी जिंदगी में जरा कंपास जो हिल गया था वो सही हुआ है. आई एम ग्रेटफुल. इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी इससे निकाले. यू विल बी ग्रेटफुल फॉर दिस एज वेल. बट रिमेंबर, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है. बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you. On that note, we thank you again, Omair. Thank you so much for being with us. अच्छा जी viewers, that brings us to the end of a very fantastic show. I hope आप लोगों को मजा आया होगा देखने में, as much as I enjoyed conducting with Omair, who brought so much energy to this episode. Stay tuned, we have a lot more coming up for you. अगर आप किसी वजह से ये show नहीं देख सके, live नहीं देख सके, तो please हमारे YouTube channel पे जाइए, Evenement Pakistan, आप subscribe कीजिए, like कीजिए, and you'll be able to catch this show and a lot of others जो हमने पहले कर चुके हैं. If you missed out on those, तो please उन्हें भी जरूर देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा. And I'll see you next week. So take care. खुदा हाफिज.